Hi everyone. Welcome back to a new weekend episode from DGMZ. Diwan-e-Ghalib Meri Zubani. For all our returning viewers and subscribers, we are very glad that you could join us again. And for all the new viewers and subscribers, we are very happy that you have discovered the podcast and decided to tune in for your first episode. Now, if you were with me in the last episode, you would know that we finished Ghazal 18 from Diwan-e-Ghalib in the last episode. So today we get to start a new Ghazal, Ghazal 19. इस गज़ल में 5 शेर हैं. There are 5 couplets to this ghazal. As always, I will read the entire ghazal once and then we will get into impressions verse by verse. So this is how it goes. मतलब अर्ज किया है, शब खुमारे शौक साकी, शब खुमारे शौक साकी, रस्तखेज अंदाजा था. ता-मुहित-ए-बादा, सूरत खाना-ए-खम्याजा था. यक कदम वहशत से, यक कदम वहशत से दर्स-ए-दफ्तर-ए-इम्कान खुला. जादा अज्ज़ाए-दो-आलम दश्त का शिराज़ा था. माना-ए-वहशत-खिरामी-हाँ-ए-लाइला कौन है? माना-ए-वहशत-खिरामी-हाँ-ए-लाइला कौन है? खाना-ए-मजनू-ए-सहरा-गर्द be-दरवाज़ा था. पूछ मत रुसवाई-ए-अंदाज़-ए-इस्तिग़ना-ए-हुस्न. पूछ मत रुसवाई-ए-अंदाज़-ए-इस्तिग़ना-ए-हुस्न. दस्त महरून-ए-हिना रुखसार रहने-गाज़ा था. नाला-ए-दिल ने दिया, नाला-ए-दिल ने दिया औराक़-ए-लख्त-ए-दिल बा-बाद. यादगार-ए-नाला एक दीवान-ए-बे-शिराजा था. So let's get into the ghazal right away. First couplet. शब खुमार-ए-शौक़-ए-साक़ी, रस्तखेज़-अंदाज़ा था. ता-मुहित-ए-बादा, सूरत खाना-ए-खम्याज़ा था. Let's do an approximate translation. Shab, night, last night. Khumaar-e-Shauq-e-Saaqi, Khumar, effects of intoxication. Shauq, desire, yearning, longing. Saki, somebody who serves the wine, many times known as the cup bearer. Somebody who gives you something to drink, and also at times the beloved. जैसे कि अब्दुल हमीद अदम का ये शेर है, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद. साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्ज़ाम चाहिए. The approximate translation is cupbearer. I do not want the sin of drinking on my conscience, or I do not enjoy the sin of drinking on my conscience. What I enjoy is the intoxication of your eyes. So just, many times, like I said, the cupbearer would be the beloved. So Khumaar-e-Shauq-e-Saaqi, intoxication of the love for the cupbearer. Shab Khumaar-e-Shauq-e-Saaqi, last night, the intoxication caused by the love I have for the cupbearer. Rastakhez-Andazaa tha. Rastakhez
the day of resurrection. And andaza is measuring something, estimating something, किसी चीज को calculate करना, counting something, right? So Rastakhez-Andazaa, trying to estimate, trying to estimate how far is the day of resurrection, trying to estimate the distance between you and the day of resurrection. Something to that, something of that nature. Now, moving on to the second line, right? Taa-Muhit-e-Baada. So, ta means till, as far as, up to the extent of, right? Wahan tak. So, ta means wahan tak. Muhit. Muhit is usually used to explain a circumference or something that is encircling, something that is on the perimeter, right? So that is what muhit is. And then bada is, of course, wine or spirit, liquor. So Taa-Muhit-e-Baada, up till the extent of the circumference of the liquor. So circumference of the liquor is basically the meniscus of the liquor. Meniscus is this circumference at the topmost layer of any liquid, right? So Taa-Muhit-e-Baada, up till the circumference of the liquor. And of course, this liquor is in a goblet, right? So from the bottom of the goblet to the top, where the meniscus is, throughout that liquid, Surat Khanaa-e-Khamyaaza tha. So there was a picture of, Surat is in the lightning of, a picture of. Khana, literal translation is house or dwelling, but by extension a space. And Khamyaaza has many meanings. Here, the meaning that fits is stretching, extending. So, if we look at the whole line, Taa-Muhit-e-Baada, Surat Khanaa-e-Khamyaaza tha, basically from the bottom of the liquid, from the bottom of the wine in the goblet till the top of the wine in the goblet, there was a picture of a space that was stretching out, that was extending. So that's the literal translation of the first couplet. Now let's get into the impression. Now, to understand this couplet, especially the first line, we need to understand the word Khumar. Many times, Khumar is like a club. It has a meaning. It has a lot of meanings clubbed under it. The entire intoxication caused by alcohol. But per my understanding, and as you know, at DGMZ, we only get into the impressions we understand. These are personal impressions. So, per my personal impression, Khumar in this couplet is a very specific state of mood after drinking, right? So basically, after drinking or after ingesting alcohol, your mood goes through various phases. The first phase is this feel good phase. That is when you have just ingested alcohol, right? And scientifically put, alcohol acts like a stimulant initially. It acts like a stimulant on the neurotransmitters in your brain, primarily dopamine and serotonin. These are known as the happy hormones. So these get stimulated when you ingest alcohol. Initially, alcohol will have a stimulating effect on your brain, especially on these two hormones, which are happy hormones, and that initial spike one feels of goodness and joy and just feeling nice about everything. There's an elation. It's a spike.
That is the first mood that you will go through. And then the second mood that one would go through after this would be the loss of inhibitions. Now this is where the spike is still increasing, and one starts feeling, for the want of a better word, braver, more courageous, more carefree, right? And there is a loss of inhibitions here. The third phase is of depression. Now, this is where alcohol has stopped acting as a stimulant. That initial stimulating effect is wearing off. Alcohol actually is a depressant, right? But it does have a stimulating effect initially. So that initial stimulating effect starts wearing off, and as it wears off, in comes very slowly and gradually this depression. And this is never a sudden thing, right? It is very gradual. As the stimulation starts to come down, this depression starts to spike up. And then the fourth phase is anxiety. This is where the stimulation has actually come down pretty much completely, and the depression has come up. By depression, I mean the depressing effect of alcohol on the central nervous system and the brain. And this is where that anxiety starts building up. And what is the anxiety? The anxiety is to bring back the stimulating phase, which is gone now, which has come down, right? So those are the four moods one would go through after ingesting alcohol. So simply put, alcohol starts its effects on the drinker as a stimulant, but ends its effects as a depressant on the central nervous system. And like I said, the switch from stimulant to depressant is not abrupt, it's not sharp or distinct, it's very gradual. And this gradual switch, where the drinker is starting to feel the stimulation wear off and starting to feel the depression slowly seep in, is probably the stage of Khumar that Ghalib is mentioning here. So ये है वो खुमार जो गालिब इस कपलेट में बयां कर रहे हैं. ये खुमार जो है, one can understand it as the aftermath after the spike, right? Or the lull after the storm. This lull or aftermath is where the drinker starts feeling the ebb or loss of stimulating effects of alcohol, making them want to get back to the initial feel good phase. And the longer it takes to get back there, the more anxious the drinker gets. This anxiety and urgency will keep building till another drink is had and the drinker is again back in the stimulant phase of alcohol. Now, with that background in mind, let's read the first line again. Shab Khumaar-e-Shauq-e-Saaqi. Last night, my intoxication for the love of the cupbearer was similar to the urgency of Resurrection Day. This is Ghalib, so it is complicated. But I did go through many impressions and descriptions of this couplet. This can get really complex, but for our episode, we will stick to the vantage point of the drinker and explain the couplet from that vantage point. There can be multiple vantage points in this couplet. It is a Ghalib couplet, but we'll stick to the corner the drinker is in and see how things look from there. So, ये जो शौक खुमारे शौक ए साकी, love for the cupbearer, right? Ghalib has taken that and compared it with the Rastakhez, right? The resurrection day.
Now, the love and the yearning a drinker feels for the cupbearer has been compared to the love and the yearning a dead person feels for the resurrection day. So you imagine the parallel he's drawing, right? Uh, we all know that resurrection is a concept of coming back to life after death. And many religions have this concept of resurrection as part of their belief and history in different ways, but but the basic principle remains the same: coming back from the dead, right? And now Ghalib, you can see how cleverly he has compared the yearning of a dead person for the resurrection day when they will become alive again to the yearning of a drinker who has come to this state of khumar where the stimulation of alcohol is wearing off and this depression and anxiety is starting to set in. In this state, the yearning of the drinker, the desperation of the drinker to get his next drink or her next drink is similar to the yearning, anxiety, and longing of a dead person waiting for the resurrection day. What a huge contrast. And ऐसा लगता है कि गालिब कह रहे हैं दोनों सूरतों में जिंदगी और मौत का सवाल है राइट दोनों सूरतों को उतनी सीरियसनेस है जैसे कि जिंदगी और मौत को होती है. नाउ एक बात और काबिल गौर है कि इस कपलेट में गालिब ने एक बड़ा शार्प और कंट्रोवर्शियल पैरेलल ड्रॉ किया है. ही हैज़ ड्रॉन अ वेरी वेरी controversial parallel because what he is doing is on the surface it seems that it seems as if he's comparing drinking, which is a sin in Islam, to resurrection day, which is a religious divine concept in many religions including Islam. So ऐसा लगता है कि शराब पीने को इक्वेट कर रहे हैं रेजरेक्शन डे से. बट इन माई हम्बल ओपिनियन दैट इज़ नॉट करेक्ट. कंपैरिजन जो गालिब ड्रॉ कर रहे हैं वो शराब पीने और रेजरेक्शन डे में नहीं है. द कंपैरिजन ही इज़ ड्रॉइंग इज बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ यर्निंग एंड लॉन्गिंग. गालिब के लिए मुद्दा worth detailing and describing in the couplet is not the drinking or the resurrection day. It is the yearning, it's the feeling, जज्बात. वो जो एक फीलिंग है उसको कैप्चर करना चाह रहे कि जैसे कि मरता मरता इंसान जिंदगी के लिए यर्न करता है. जिस डेस्परेशन, जिस एंजाइटी, जिस इंटेंसिटी से एक मरता हुआ या मरा हुआ इंसान ज़िंदगी के लिए बेचैन होता है, उसी तरह से पीने वाले का जब नशा उतरने लगता है तो उसी बेताबी, उसी एंजाइटी, उसी यर्निंग से वो अपनी नेक्स्ट ड्रिंक के लिए बेचैन होता है. एंड माइन्यूशा देखिए, डिटेल देखिए जो गालिब ने कैप्चर करी है ऑफ द पर्सन ड्रिंकिंग एंड द वे हिज मूड्स आर चेंजिंग एंड मेकिंग हिम थिंक एंड इमेजिन एंड यर्न एंड वॉन्ट. कितनी रियल लाइफ ऑथेंटिसिटी है. ये नहीं पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को उठा के बोल दिया वी गॉट ड्रंक एंड वी गॉट इंटॉक्सिकेटेड. एक एक स्टेप उसका डिटेल किया है. एंड लाइक आई सेड, बात ना तो पीने की हो रही है ना रेजरेक्शन डे की हो रही है. बात हो रही है उस बेचैनी की, उस बेकरारी की, उस बेबसी की जो महसूस होने लगती है जब नशा उतरने लगता है, खुमार स्टेट में आने लगता है.
उस एंजाइटी को कंपेयर किया है एक मुर्दा से जो कि रेजरेक्शन डे का इंतज़ार कर रहा है, जब सब सब फिर से ज़िंदा होंगे एंड अपने अपने कर्मों के हिसाब से या इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, बट चांस सबको एक और मिलेगी, एक और चांस मिलेगी सबको. ब्यूटिफुल. The accuracy, that alcohol thing which I detailed to you, I had to, it is from a medical text. So उस लेवल की डिटेल दिमाग में रख के गालिब का ये कपलेट समझ में आया है, क्योंकि अदरवाइज बात समझ में नहीं आ रही थी कि खुमारे शौक़े साकी का रस्तखेज़ अंदाज़ा कैसे है. What is the parallel? What is he trying to compare between intoxication and resurrection day? Hopefully it made sense to you. Let's move on to the second line. अभी तो पहले कपलेट की पहली लाइन हुई. Let's move on to the second line. ता-मुहित-ए-बादा, सूरत खाना-ए-खम्याज़ा था. So we have already done the translation of this. Let's get into the impression. So what Ghalib is trying to say is that I'm sitting in my corner, probably I've had my first drink, and अब intoxication खुमार वाली स्टेज में आ रहा हूँ, और अब ये दिख रहा है मुझे. क्या दिख रहा है? Up to, till the meniscus of the wine, which is swirling in the wine goblet, basically throughout the container of wine, which will be your goblet, there is a picture, Surat. Right? There is a picture. And क्या है वो picture? A picture of a space, khana, a space, khamyaaza, which is stretched out, which is extending. And by extension, almost inviting, right? So वो जो wine goblet दूर कहीं रखा है, which will be the next drink he is going to take, वो वाइन गॉबलेट के अंदर का जो लिक्विड है वो बॉटम से लेकर टॉप तक एक ऐसा लग रहा है, एक पूरा एक स्पेस है जो कि अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है इन अ वेरी इनवाइटिंग वे, स्ट्रेच आउट कर रहा है टुवर्ड्स गालिब इन अ वेरी इनवाइटिंग वे, राइट? नॉट जस्ट अ ड्रॉप, नॉट जस्ट अ सिप, पूरे का पूरा गॉबलेट, उसमें जितने पूरा लिक्विड है वो पूरे का पूरा लिक्विड स्ट्रेच आउट कर रहा है, अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स गालिब. ऐसी पिक्चर उस गालिब को दिख रही है ऑफ द वाइन इन द गॉबलेट. दिस इज हाउ ही इज परसीविंग द वाइन इन द गॉबलेट, विच इज सेट probably somewhere far from him at this point in time. That dynamic will change. But at this point in time, that goblet full of wine is probably kept afar from him. And he's sitting here in his state of khumar. When he looks at it, this is what he's thinking. It seems like all the liquid in that goblet, from the base to the meniscus, is just stretching out, extending itself, almost inviting Ghalib to take it. And now when you connect the first line to the second line, one can see कि पहली line में Ghalib has detailed the drinker's intense yearning and longing for alcohol. And in the second line, he goes to the other side and details the extending, the stretching of the alcohol to the drinker. So दोनों तरफ से affinity है. ड्रिंकर अल्कोहल की तलब कर रहा है, अल्कोहल भी गॉबलेट में बैठा हुआ ड्रिंकर की तलब कर रहा है. रेसिप्रोकेशन है दोनों तरफ से. एंड दैट इज व्हाट इज अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स जब कपलेट लिखा होगा तो सोबर होंगे, बट वी नो दैट गालिब यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट. ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो ख्यालात है जो बयां कर रहे हैं, आई वुड बेट माई सेविंग्स ऑन इट कि ये वाकई में महसूस किया होगा. ये इमेजिनेशन नहीं है,
ये चीज़ महसूस करी होगी खुमार में, और फिर क्योंकि ये डिटेल आ ही नहीं सकती है इमेजिनेशन से। जिस चीज़ को समझने में इतने सारे फैक्ट्स लग जाएं, उस चीज़ को लिखने में वन कैन ओनली इमेजिन how much would have gone into it in terms of experience, observation, and imagination. And गालिब तो एज अ ड्रिंकर फिर भी आज़ाद हैं, है ना, अपने कोने में आज़ादी से बैठे हैं और खुमार महसूस कर रहे हैं, ये यर्निंग, ये लॉन्गिंग, ये डिज़ायर महसूस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ड्रिंक। बेचारी वाइन, मैं तो ग्लास में कैद है, गॉबलेट में कैद है, कैप्चर्ड इन द गॉबलेट, पर उसके अंदर से भी खाना-ए-खमियाजा, सूरत खाना-ए-खमियाजा, उसके अंदर से भी वो वाइन इज़ अ पिक्चर ऑफ समबडी who is something which is extending, stretching out, trying to reach out to the drinker कि come and get me, come and get me. And ये जो रेसिप्रोकेशन है, राइट, बिटवीन द ड्रिंकर एंड द वाइन, ये रेसिप्रोकेशन गालिब ने बहुत ब्यूटिफुली एक जगह और कैप्चर किया है। उनका शेर है, बेकद्रे ज़र्फ़ साखी, बेकद्रे ज़र्फ़ साखी, खुमार तिश्ना कामी भी, जो तू दरियाए मैं है, जो तू दरियाए मैं है, तो मैं खमियाजा हूँ साहिल का। We have covered this couplet in Ghazal 12. So if you want to explore this concept further, I would strongly recommend that you tune into Ghazal 12. सिर्फ 2 शेरों की गज़ल है वो, इट्स अ शॉर्ट एपिसोड, उसमें पूरा कंप्लीट इम्प्रेशन हम लोगों ने शेयर किया है। बट आज के एपिसोड के लिए we can use this couplet to appreciate the fact that Ghalib in his unique style draws a parallel between the relationship of a drinker and wine to the relationship of shores or banks to the sea. Both these things, the drinker and the wine, the banks and the sea, or the shores and the sea, इनका रिलेशनशिप ऐसा है that they will always yearn and long to stick to each other in the closest proximity possible. वो जुदा होने की कोई स्पेस नहीं है। उनका वजूद ऐसा है कि वो एक साथ एक दूसरे से मिलके ही रहेंगे। दरिया कभी अपने साहिल से जुदा नहीं होगा, साहिल दरिया से चिपका ही रहेगा थ्रू आउट द एक्सटेंट ऑफ द दरिया। एंड मैं कभी यही है कि उसकी भी डेस्टिनेशन जो है वो यही है कि ड्रिंकर के लिप्स के बीच में रहे, राइट। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, वेयर द यर्निंग एंड लॉन्गिंग टू स्टे क्लोज, meshed together, is very intense, and they never ever want to drift apart. If they ever have to, it's a very anxious state of affairs. Okay, so that completes the first couplet. Shab Khumaar-e-Shauq-e-Saaqi, Rastakhez-Andazaa tha, Taa-Muhit-e-Baada, Surat Khanaa-e-Khamyaaza tha. Let's move on to the second couplet. यक कदम वहशत से दर्स-ए-दफ्तर-ए-इम्कान खुला, यक कदम वहशत से दर्स-ए-दफ्तर-ए-इम्कान खुला, जादा है अजाए-दो-आलम दश्त का शिराजा था. Let's do a quick translation. यक कदम वहशत से, by one single step of fear or frenzy. Yak, one kadam step, वहशत, fear or frenzy. Dars-e-Daftar-e-Imkaan khula. Dars is a lesson
or a course in something. Daftar is a list or an index of courses, maybe. And Imka is possibilities. Khulaa, open or unraveled. So, with one step of fear slash frenzy, there was an opening of a whole list, a whole catalog, a whole possibility of lessons, right? And the second line is Jaada Ajzaa-e-Do-Aalam. So Jaada is a road, a pathway, a middle road, if you may. Ajzaa-e-Do-Aalam Dasht, the two parts of the world. Dasht is desert or forest, two parts of the world, uh, world rupee desert or world rupee forest. Ka Shiraazaa tha. Shiraazaa is that thread which binds a book. It runs through the spine of the book. So the second line is that this Qadam of Vahshat, जो कि first line में mention किया है, that proved to be a path, Jaada, a middle road, a path where between Ajzaa-e-Do-Aalam Dasht, between the two worlds, and Shiraazaa tha, like the book binding thread which runs in the middle of the book, this road ran in the middle of the two worlds. So that's the approximate translation. Probably might not make a lot of sense right now, but let's get into the impression and hopefully it will come through. So give me 1 minute. So to enjoy this couplet, the centerpiece of the couplet is Do Jahan, the two worlds. And we should spend some time on that because that will help us understand and enjoy the couplet completely. So अब ये जो दो जहां हैं, we will cover them in three pieces. The first piece, what is Do Jahan philosophically? What does philosophy say about it, right? So philosophically, Do Jahan की theory है. So Plato, he was one of the most important philosophers of ancient Greece, along with Aristotle. Plato lived in Athens during the 5th century BC, and the theory of forms is one of Plato's most important theories. It is a central assumption of much of his philosophical work. It is also referred as Plato's metaphysical theory. So, what is this theory of forms? Plato, in his theory of forms, introduces the concept of the two worlds, the world of forms and the world of sense. Both these worlds seem to be existing with a line in the middle. The upper part of the line makes up the intelligible world of forms, and the lower part of the line consists of the visible world of sense. The intelligible world of forms is invisible, non-physical, and can only be apprehended by the soul, for the soul shares similar qualities. The sensible world, which is visible, physical, and constructed of imitations of the forms, is felt via the body. This is our world, which is constantly changing, and we rely on our senses to understand what is going on. Now, the distinction between the appearance and reality is the core Platonic distinction. The most famous argument Plato makes for the theory of the forms is by the following analogy.
Plato asks us to imagine that we are in a cave. All around us is darkness. The only thing we can see is on the wall before us, where a light is shown and shadow figures dance on the wall. These are being manipulated by unseen tormentors. For Plato, this is what the world of ordinary appearances is like. Plato then asks us to imagine that we break our bonds and escape out into the open air. We see flowers and trees and everything else clearly as it really is. The light we see by is no longer the obscure light of the cave, but the bright, clear light of the sun. For Plato, this is what the world of the forms is like. Plato's theory of forms is one of the most important theories in Western philosophy and a major contribution to Western thought. Even Aristotle believed that the universe was divided into two parts, the imperfect and changeable earth and the perfect and unchanging heavens. तो ये जो दो जहां है, it seems to be a big deal. It seems to be a big deal. Philosophically, as you saw, some of the oldest and the greatest of philosophers had started talking about the world being in these two distinct parts. And of course, at that time, these philosophers like Plato believed that the normal people like us, right, simpleton, simple minds, nothing fancy, will only be able to perceive and understand and enjoy the ordinary world of senses. It is only the philosophical people, the teachers, the learned people who will be able to perceive, understand, and enjoy the form world, the intelligible world. Now, ये तो बात philosophy की हो गई. How does philosophy deal with the concept of two worlds, the dualism of two worlds? Let's come to Urdu poetry. Right? So, Urdu poetry में भी दो जहाँ एक बहुत interesting, बहुत well used, commonly used, intricately used concept है. Right? And उर्दू पोइट्री ने दो जहाँ पर एक अलग ही टेक लिया है. उर्दू पोइट्री कहती है दो जहाँ के अलावा एक तीसरी चीज़ और भी है जो इन दो जहाँ से बड़ी है. वो किस्सा याद आ रहा है अकबर बीरबल का. बिना बहुत डिटेल में जाने के, वेरी ब्रीफली पुट, बीरबल को एक बार बादशाह अकबर ने बोला कि आपके लिए एक रिडल है. वो हमेशा टेस्ट तो करते ही रहते थे बीरबल को. उनके 9 रत्नों में से प्रॉब्ली सबसे ब्राइटेस्ट थे बीरबल, तो हमेशा टेस्ट करते थे उनको. एक पेपर लिया, उस पर एक लाइन खींच दी एंड बोला कि बीरबल अब ये लाइन जो है इसको छोटा कर दो, बट ना तो तुम इसको छू सकते हो, ना मिटा सकते हो, ना चेंज कर, कुछ नहीं कर सकते. I have drawn this line on the paper and now you have to shorten this line without touching it, altering it, erasing it, doing anything to it. And then the emperor waited for Birbal to figure this. Birbal went to the table where that paper was, picked up the pencil and he drew a longer line beside the line the emperor had drawn. He said, हो गई आपकी line छोटी. So by the story, sometimes to make something smaller, you don't have to work on that thing. Sometimes to make something smaller, you just have to find a bigger thing. Right? So that's what Urdu poetry has done. So the two worlds were the greatest, the biggest probably, but Urdu poetry has given us the third thing, which is even bigger, even better. And
To understand what that is, let's go through some shares. प्यारे लाल रौनक दहलवी का ये शेर, किया है इश्क ने आज़ाद, किया है इश्क ने आज़ाद दो जहां से हमें, किया है इश्क ने आज़ाद दो जहां से हमें, ना कुछ यहां से गरज है ना कुछ वहां से हमें. Solution दे दिया. Love has freed us of the paradox of the two worlds. After finding love, neither do we care about that world nor do we care about this world. फिराक गोरखपुरी का शेर, अब इसको कुफ्र माने या बुलंदी नजर जाने, अब इसको कुफ्र माने या बुलंदी नजर जाने, खुदाए दो जहां को देके हम इंसान लेते हैं. Beautiful couplet. The approximate translation is, you can call it a sin, or you can call it the impertinence of my eyes, which have risen above the level they were supposed to rise. But this is what I'm going to do. I am going to trade these two worlds given to me by God for one person. Beloved, right? फरहाद परवीन का शेर, दो जहां पाने का आ राज बताऊं तुझको, दो जहां पाने का आ राज बताऊं तुझको, जा किसी प्यार भरे दिल में ठिकाना कर ले. Beautiful couplet, right? Approximate translation is, come to me, I will give you the secret of both the worlds. Come to me, I will give you the secret of both the worlds. The secret is, go and make home in a heart filled of love. अब्दुल हमीद अदम का शेर, कौन अंगड़ाई ले रहा है अदम, कौन अंगड़ाई ले रहा है अदम, दो जहां लड़खड़ाए जाते हैं. The approximate translation is, who is by extension the beloved, stretching, right, stretching out in their khumar, probably, because I can see that both the worlds have started to shake. And that is the intensity, that is the intoxication of the beloved, stretching out or yawning or whatever. It is so beautiful that it is making both the worlds tremble. Abdul Baka Sabru Saharanpuri का शेर, apologies, मेरा है दो जहां में रहनुमा दिल. One of my favorites from this episode. मेरा है दो जहां में रहनुमा दिल, पयंबर दिल है, काबा दिल, खुदा दिल. Right? So the approximate translation is that in these two worlds, in both the worlds, my only friend, my only confidant is my heart. Is my heart. The only person I trust is my heart. Heart is my prophet. Heart is my Kaaba, by extension my pilgrimage, and heart is my God. Everything, my religion, everything I hold, my value system, everything is heart. In both the worlds. That is from where I operate. That is from where I operate. Now, नईम ज़रार अहमद का ये शेर, तेरी आँखों के दो सितारे थे, तेरी आँखों के दो सितारे थे, जिन पे हम दो जहां हारे थे. The approximate translation is, it was the two stars in your two eyes. It was the two stars in your two eyes on which I had sacrificed the two worlds I had. नसीम शाहजहाँपुरी का शेर, इश्क है वजाए दो जहां
इश्क है वजाए दो जहां, इश्क है रूए दो जहां, कम है जबी ये बंदगी इश्क की बारगाह में. So basically, again, love is the reason for the two worlds. Love is the soul of the two worlds. One falls short. One falls short of worshipping or opportunities to worship or place to worship, space to worship in this temple of love. There's just so much. There's just so much to be thankful for. There's just so much to pray for, wish for, that one can never do it enough. One can never do it enough. So that was the Urdu poetry take on Do Jahan. Beautiful take. Simply put, love is the third thing and the biggest. It surpasses the two worlds and all the hype around it. Once you have love, those two worlds seem very small, right? Love surpasses them in terms of what it encompasses, what it can achieve, what it brings to the table. And we as lovers, would any day give up these two worlds for a small place in the heart filled with love for us. Any day we would give these two worlds up, sacrifice it in a blink of an eye for that little space in the heart of someone who loves us. Beautiful. And now the third take on this Do Jahan is अपने गालिब का टेक. मिर्ज़ा का टेक क्या है इस पे, राइट? सो उनका टेक आपको इस कपलेट में मिल जाता है. यक कदम वहशत से. According to Ghalib, yak kadam vahshat is the key. It is the key to both the worlds. And he could have said, kadme vahshat se. Vahshat translated to fear and frenzy. I love that because it sounds paradoxical, but it is so true. राइट कि ये जो प्यार का, इश्क का या किसी भी चीज़ जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, उस चीज़ में हमेशा एक डर भी होगा और एक जुनू भी होगा. डर इस मारे होता है क्योंकि चीज़ आपको अजीज़ इतनी है, राइट, कि यू वांट इट बैडली. एंड जुनू इस मारे होता है you want it badly, right? So fear and frenzy go kind of hand in hand for anything like this. And Ghalib कहते हैं यक कदम वहशत से. कदमे वहशत से नहीं, steps of fear and frenzy नहीं, one step of fear and frenzy. वो one बहुत powerful है. He has put so much onus. He's put the spotlight on that first step. According to him, वो एक step अगर आपने ले लिया, where you throw caution to the wind, you throw your calculations, assessment, analysis, paralysis to the wind, and एक बार आपने वो एक कदम ले लिया जुनू का, despite the डर, that one step of frenzy, despite the fear attached to it, आपके लिए दोनों जहां खुल जाते. क्योंकि वो कहते हैं यक कदम वहशत से दर-से-दफ्तर-ए-इम्कां खुला. I took that first step and suddenly, ऐसा लगता है गालिब एक सरप्राइज एलिमेंट भी डाल रहे हैं इस कपलेट में कि एक कदम से इतना कुछ हो जाएगा. भाई यूजली तो मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कदम लेने पड़ते. यहाँ मैंने सिर्फ एक कदम लिया था एंड दर-से-दफ्तर-ए-इम्कां खुला. Almost as if the entire realm of possibilities opened up to me with one single step. And we know, we have heard it many a times, that the first step is the toughest. एक बार एक कदम रख लिया
तो फिर दूसरा कदम उसके आगे रख दो, फिर उसके आगे रख दो, फिर उसके, तो वो जो पहला कदम है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा डर लगता है, एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा जुनून चाहिए। एंड कितनी ब्यूटीफुली गालिब ने वो पहले कदम को ग्लोरीफाई किया है यहाँ पे, कि वो एक पहला कदम अगर तुमने ले लिया, जहाँ तुम, जैसे वो प्लेटो की दो वर्ल्ड्स है ना, सोल से सोचे और सेंस से नहीं सोचे, अगर वो पहला कदम ले लिया, सडनली दफ्तर-ए-इम्कान खुला, जैसे कि एक ट्रेजर चेस्ट खुल गया पूरे का। चेस्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, पूरे का पूरा ट्रेजर वर्ल्ड खुल गया उनके लिए, एंड पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस नाउ, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि डर को कैसे काबू करके नई चीज़ करें, समझ में आ गया कि अपने फियर को कैसे कंट्रोल करें और अपनी फ्रेंजी को कैसे यूज़ करें। और जहाँ वो गुत्थी समझ में आ गई है, अब तो हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि सब सब चीज़ों का जो कि अभी तक करी नहीं है, यही फॉर्मूला है, यक कदम वहशत। दिस इज द की, पर गालिब दिस इज द की। एंड देन सेकेंड लाइन में वो कहते हैं, जादा-ए-दो आलम दश्त का शिराजा था। अब ये भी बहुत ब्यूटिफुल विजुअलाइजेशन है, राइट। सो गालिब कह रहे हैं कि मैंने ये जो पहला कदम लिया, जिससे दर-से-दफ्तर-ए-इम्कान खुल गया, ये जो पहला कदम था, ये एक जादा बन गया, एक रास्ता बन गया, एक मिडिल पाथ बन गया। ये एक कदम पूरा पाथ बन गया, और वो पाथ क्या है? वो एक मिडिल रोड है, जिसके इस तरफ एक वर्ल्ड है, उस तरफ दूसरी वर्ल्ड है, एंड ये पाथ उन दो वर्ल्ड्स के बीच में से जा रहा है। यानी कि अब मुझे एक रास्ता मिल गया है, जिस पर जब मैं चलूँगा तो मैं इस वर्ल्ड को भी इंजॉय करूँगा, इस वर्ल्ड को भी इंजॉय करूँगा, दोनों वर्ल्ड्स के प्रॉक्सिमिटी में हूँगा। एक रास्ता खोल लिया मैंने अपना, विच विल गो राइट थ्रू दीज टू वर्ल्ड्स। Ajzaa-e-Do-Aalam Dasht, the two parts of the world, the two worlds, right? And अगर आप विजुअलाइजेशन की तरह से समझें, राइट, सो शिराजा वर्ड यूज़ किया है सेकेंड लाइन में, जादा है अज़ाए-दो आलम दश्त का शिराजा था। तो ये जो पहला वहशत का कदम था, ये एक मिडिल रोड था बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। बिल्कुल जिस तरह से किताब के पन्नों को शिराजा बांध देता है, किताब के बिखरे पन्नों को शिराजा बहुत प्यारी तरह, खूबसूरती से, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बांध के एक जगह इकट्ठा कर देता है ना, उसी तरह ये एक कदम वहशत का एक पाथ बना देता है, जो कि अब एक शिराजे की तरह काम करेगा, और वो सारी जो बिखरे एस्पेक्ट्स थे आपकी लाइफ के, इस वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड में और हर जगह, उन सब को बांध के इट विल मेक सेंस आउट ऑफ देम, इट विल कंपाइल देम फॉर यू, इट विल अरेंज देम फॉर यू इन सच अ वे दैट इट विल मेक सेंस। पेज 1 के बाद 2 होगा, 3 के 4 5 6, थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, things will get collated in a way that they will start making sense. And अगर आप वो ये यक कदम वहशत का नहीं लेंगे, तो फिर वो आएगी, वो एक शेर आएगा अभी बाद में, लगते दिल बबाद। सो जिस तरह से अगर आप ये एक कदम वहशत का नहीं लेंगे, तो ये मिडिल रोड कभी बनेगी नहीं, और आपकी ज़िंदगी के जो पन्ने हैं वो ऐसे बिखरे ही रहेंगे, क्योंकि उनको कभी शिराजा नहीं मिलेगा विच विल रन थ्रू देम इन द मिडल, राइट, एंड बाइंड देम टुगेदर। सो फिलॉसफी बहुत है इसमें, तभी वो थोड़ा रेफरेंस करना पड़ा फिलॉसफी का, बिकॉज फिलोसफिकल शेर है ये, फिलोसफिकल शेर है ये, वेर गालिब कहते हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी इस वर्ल्ड में आप फियर और फ्रेंजी से डरते रहे और हर चीज़ उसी तरह से करते रहे जिस तरह से वो कर रहा था और वो कर रहा था और वो कर रहा था, और
इस चीज़ से डर लगा तो ये नहीं किया, इस चीज़ से डर लगा तो ये नहीं किया, और इस तरह से ज़िंदगी बिता दी इस दुनिया में, तो बस फिर इसी दुनिया के बारे में जानेंगे. बट यक कदम वहशत, take that first step of frenzy despite the fear attached to it. And you will discover this middle path that will take you, which runs between both the worlds and will take you through both the worlds very easily. And just like the binding of a book that brings all the pages together, this path will bring both your worlds together in a way that it will make sense to you, that you will be able to enjoy it, understand it. And visualization तो है ही बहुत प्यारा, राइट? एक पगडंडी एक मिडिल रोड जा रही है, उसके इस तरफ एक दुनिया है, इस तरफ एक दुनिया है. बिल्कुल उसी तरह से जैसे किताब, उसका हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है, और बीच में से किताब की स्पाइन जा रही है, जिसमें ये शिराजा, ये थ्रेड है जो उसको बाइंड करता है. ब्यूटिफुल शेर, दोनों शेर बहुत प्यारे थे. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेकेंड कपलेट. यक कदम वहशत से दर्स-ए-दफ्तर-ए-इम्कान खुला, जादा है अज़ाए-दो-आलम दश्त का शिराजा था. We will stop here for today and we'll pick up from the third couplet in the next episode. I do hope you guys enjoyed the impression. अगर आपको impression पसंद आया है, please like, share and comment. Give me your feedback, right? If you know somebody who would enjoy this content, would humbly request you to share it via your social media, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. For all the new viewers who have joined us for the first time, I strongly recommend please access the episode titled Introduction to DGMZ, because that will give you a good insight into the motivation and objective behind this podcast. What are we trying to do here? Also, for your reference, currently we have 2 playlists. One playlist consists of these weekend episodes where we get into one ghazal at a time from Diwan-e-Ghalib, and the second playlist consists of bonus episodes. They are still around Urdu poetry, Mirza. They also include events at DGMZ. So दोनों playlist explore करिए, आपको जो episode पसंद आए, feel free to access that. A gentle reminder, I did it in the last episode also, but have पोल्स पे अभी भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है. सो आपको याद दिला रहे हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो 2 पोल क्वेश्चंस हैं कम्युनिटी टैब में. 2 पोल क्वेश्चंस. They are with reference to this new initiative we are planning at DGMZ Mixtape, which will be a list of curated songs. अगर आपके पास वक्त हो, दोनों पोल क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करें और अपना कमेंट फीडबैक शेयर करें अबाउट दिस न्यू इनिशिएटिव. वी डू वांट your feedback and inputs to be able to judge correctly how to go about this initiative, and whether to go forward with this initiative or not. That's all I had for now. Let me send a lot of love and light to all of you, and thanks for watching.